guys, welcome to BIOGURU to your own channel. Today we will discuss about menstrual cycle. देखिए menstrual cycle females में एक reproductive cycle है and then इसमें अलग अलग parts हैं, जैसे कुछ ovarian part है, ovarian cycle है, then uterine cycle है, then some changes in the hormones level. तो उन सारी cycles and phases के बारे में हम discuss करेंगे. So first of all, the reproductive cycle in the female primates, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle. And in non-primates, it is called oestrus cycle. The term menstrual cycle is applied to cyclic changes that occur in endometrium every month. देखिए endometrium क्या था? यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. तो साइक्लिक चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, क्योंकि जो रप्चर होती है वो एंडोमेट्रियम ही होगी. इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज. सो जो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 29 डेज की साइकिल है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्ज. तो फीमेल्स में जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मेनार्ज. एंड वन ओवम इज रिलीज्ड, it is called ovulation, during the middle of each menstrual cycle. तो कब होता है? 14th day पर. And the major events of menstrual cycle are menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. These are 4 main phases. First is menstrual phase. देखिए menstrual phase में क्या हुआ? The cycle starts with the menstrual phase, menstruation और menses. ये वो period है जिस टाइम पर bleeding होती है. When menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days, the menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining. जो endometrium wall है वो break होगी, rupture होगी of the uterus and its blood vessels, which forms a fluid that comes out through the vagina. And menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized. अगर fertilization हो गया, then it causes pregnancy. And lack of menstruation may be indicative of the pregnancy. Then, however, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फीमेल्स में irregular menses हैं, menstrual cycle है, या मान लीजिए कभी कभी स्किप हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेगनेंसी ही होगी. कई बार उसके रीज़न स्ट्रेस, पुअर हेल्थ etc. भी हो सकते हैं. The primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicles during this phase. इसके बारे में हमने oogenesis में डिस्कस किया था अपने previous वीडियो में. So simultaneously, the endometrium of the uterus regenerates through the proliferation. And these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. Pituitary hormones कौन से हैं? LH and FSH. LH is luteinizing hormone. FSH is follicular stimulating hormone. And ovarian hormones are progesterone and estrogen. The secretion of gonadotropins, LH and FSH, increases towards the end of the follicular phase. And gonadotropins in turn stimulates follicular development as well as secretions of estrogens by the growing follicles. तो gonadotropins क्या है हमारे? LH and FSH. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. Middle of cycle 14th day, क्योंकि 28 days की cycle है. LH and FSH. So rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge. और ये जो LH surge है ये stimulate करता है ovulation को. It induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, the secondary oocyte. It is called ovulation. तो ovulation कब होगा? 14th day पे, the mid of menstrual cycle. During luteal phase, अब आता है luteal phase. Luteal phase क्या है? Corpus luteum का formation. During luteal phase, the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. अब जो बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में. एंड द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन which is essential for maintenance of the uterine endometrium.
endometrium. And such an endometrium is necessary for implantation of the blastocyst stage and other events of pregnancy. क्योंकि endometrium की वॉल पर ही implantation होता है. And during pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. और जो complete period है, even जो complete pregnancy का period, gestation period plus lactation period, उन दोनों ही period में menstrual cycle stop हो जाती है. Then, in the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates into a whitish body called corpus albicans. अगर fertilization नहीं हुआ, pregnancy नहीं हुई, तो उन condition में जो corpus luteum है, वो degenerate होता है और corpus albicans में convert होगा. This causes disintegration of the endometrium, leading to menstruation. And in human beings, menstrual cycles cease around 50 years of age, and it is referred to as the menopause. Menopause, natural cessation of menstrual cycle. तो about 50 years के बाद females में जो menstrual cycle है वो cease हो जाती है, then वो आगे नहीं होती. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and the menopause. तो menarche से लेके जो menopause तक का period हुआ किसी भी female का, it is called reproductive period. So you can see there are many phases. देखिए यहाँ पे endometrial lining, जो endometrium में changes आते हैं वो सारे changes आप यहाँ पर देखते हो कि starting में जो endometrium है वो rupture होगी, then it is called menses, then regeneration होता है endometrium का. यहाँ पर FSH, LH, जिसको हम LH सर्च की बात कर रहे थे, पीक पर जाते हैं. एंड देन प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन एंड FSH. तो ये सारे हार्मोन्स क्या है? ये सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड menarche. And the permanent cessation of menstrual cycle is called menopause. And ये complete period क्या हुआ? इसका जो बीच का period है that is called reproductive period of female. So now some MCQs. The first menstruation is called as menopause, menarche, viropause or andropause. Yes, it is called menarche. That's good. Then during mid-cycle, the rapid secretion of LH results in ovulation, development of ovunia, development of secondary and tertiary follicles, formation of polar body. Yes, it is ovulation.